Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I, Amna Ahmed Khan, welcome you all on the behalf of executive members of CTN and Mr. Masood Ali Khan. We are honored to have the chief guest of the evening, General Ehsan Salim Hayat. Sir, thank you. And we will begin with the recitation of Holy Quran, and I would like to call Qazi Mansha for the recitation. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق Allah. Kindly rise for the national anthem. We have General Ehsan Salim Hayat as our chief guest. He is a retired Karachi. Sir, your presence here is a matter of great honor for all of us. Thank you for joining. Today we all have joined hands in order to build a better society. And this has been possible due to the chairman of CTN, Mr. Masood Ali Khan. Mr. Masood Ali Khan is the founding chairman of CTN, and he is a former DMD Pearl Continental Hotels, and along that he has been a managing director of Pakistan Tourism Development Corporation. He is an author of many books and chairman of Hall of Fame of Pakistan. He was also the advisor to the Senate Tourism Committee for 5 years. Sir, I would request you to please come upon the rostrum. Thank you. Thank you. I'm really overwhelmed today. I want to thank Air Commodore Chishti Saab for sparing his valuable time of 1 hour to share his knowledge and wisdom with most of the young and old people. And I want to thank you, Chishti Saab, and I want to thank more so of our very special chief guest, General Asiniat. You're very kind to honor us. I also want to thank General Makbul from all his schedules that he has. He has come to attend this workshop cum seminar. He's also chairman and the founding member of Teach a Child School in Johor Town, and also DHA. It's a school for the less privileged people. The fees is only 5 rupees, and today it has been almost 23 years. It has been almost 23 years, and today those kids who used to sleep in one room with 5 other kids, no fan, just one light bulb, today they are assistant commissioner, doctor, engineers, lawyers. And most of them get scholarships from LUMS and other universities. I also have General Najib, and I also have General Tariq. General Tariq was leaving at 8 o'clock, and he said, I'll still come, but he may be leaving early around 6:10, 6:15. Jan Saab, thank you for being so busy and still coming. Colonel Zayad Saab, we have owner of Yum Group and the regional director of WABDA, who has helped us with the light today, and our legend, Javed, who is going to thank you all in the end. Please, will you stand up? He's in the World Book of Guinness, 52 years he has been making cartoons for Jung with not a day missed. And what a legend, Thank you.
We have a young group owner and also the representative. We have 2 young entrepreneurs and owner of 6 5-star hotel restaurants, Mandarin Kitchen and Sumo, Harun Manu and Akbar Ali Khan. Will you please stand up? And Chaudhry Sahab, will you please stand up for a few seconds? We also have the faculty of the teacher child. We also have a representative here from UET, Kennett College, Home Economics. There are actually more people coming. We are having a problem to seat them. Also from City School and also from Beacon House. We also have an Honorary Consul General Iftikhar Feroz, who was previously the chairman of City Schools. Iftikhar Sahab, you are here somewhere? Would you please rise for a second? We also have a legend and a world-renowned poet, Nazir Kassir, and his wife, who's a coach. Would you please stand up for a few seconds? His books have been translated in about 5 languages, including Spanish and Italian. And he had the recital over here some time ago. Amazing gentleman. Thank you for coming. I know you're busy, but thank you very much. There are so many other important people that I'm trying to find to recognize them, but I want to thank you. I also want to thank you, our executive board members. Qazi Sahab, aap khade ho jaएं. Shala, aap khade ho jaएं, please. And Dr. Nausheen is not here, and there are few other members who are not there. Apna Chishti Sahab is also a member of our CTN, and where is our friend who's a country PR head of TCS? Yes, he's standing here. And Arif Ansari Sahab, a man who makes things happen for everyone. Thank you so much. I would like to share basically 2 things and not take that much time. One is that CTN is a Constructive Thinkers Network program. Some time ago, me and my family and other members decided that we have a nice hall, we should spend the money, convert it, and create a forum for people who can use this free of charge, as long as it's non-commercial, non-political, and non-religious. But as far as it's mushaira hai, art hai, exhibition hai, literature hai, koi contribution hai, and a lot of young people don't have a platform to come because of the expenses of the hotel they can't afford. So this forum is available for them free of cost. We even provide simple basic high tea also for them. So if you all want to tell your young ones to use this hall, the hall is there for you. There'll be not a single charge, and it's fully air conditioned. It has chairs, tables, mic, multimedia, everything you can ask for. All you have to do is to conduct your function, come here and enjoy. Normally we schedule it for only 2 hours. Yesterday I was sitting with Dr. Soch, a very dear friend and a very intelligent man. He's an educationist, a scholar. And he said something very profound to me. He had on his table 2 things. One, a blade, very sharp, and the other he had an axe, kulhadi. And I was surprised why he has these 2 things. So he told me, go and cut the tree with the blade. You told me it's very sharp. So I picked up the blade, tried to cut the tree, made no difference. I got very disappointed. I came back and asked the gentleman that it doesn't work, it's very sharp. He said, take the axe, strong, big. So I hit the tree and it had a dump, uski cheel utar di usne. I came back and he said, now take the axe and cut the hair. The big strong axe could not cut the hair. मैं सोच में पड़ गया
कि इतनी बड़ी चीज़ दरख्त को तो काट सकती है मगर बालों को नहीं काट सकती. I tried and tried. He said, try the blade. And it did it in seconds. And he looked at me and said, we must understand ourselves, our capacities, our limitations, our talent. And if we only understand that we were designed to be a blade and not an axe, we'll lead a very happy life. And if we know that we are an axe and cannot be a blade, and understand that capacity, that talent, that strength within us, we'll be very happy. Most of the educational institutions confuse that. They make the fish climb the tree, and they fail again and again. They try the monkey to swim. Monkey was designed to jump, and they fail again and again. I just leave this thought to know yourself. Thank you. Thank you so much, sir. Our power speaker of the evening is Air Commodore Khalid Chishti, retired. He's a former fighter pilot of Pakistan Air Force, and in honor of his services, he has been awarded with Sitara Imtiaz and Sitara Basalat from the President of Pakistan. He has flew over 3,000 flying hours and commanded fighter squadron and base. He has done his graduation in Armed Force War College from Turkey and Asia Pacific Strategic Studies course, Hawaii, USA. After his retirement, he remained a faculty member in National Defense University, Pakistan Air Force War College, and Naval War College. Currently, he is a faculty member of National College of Arts, PIFT, UMT, and Khalid College. For the past 18 years, he is working on the leadership of Quaid-e-Azam, and he has delivered many talks on international level. Sir is currently doing his business because he is a multitasker, and he is running his own business of sauces named as Yums. So we are honored to have you, and I would please request you to come upon. Thank you. Okay. Karra? No. Okay, let's start. Let's go back to 26 February 2019. This was the day many of us remember not with great memories. This is the place that was attacked by the Indian jet fighters, 24 of them. There were a total of more than 75 aeroplanes which tried to penetrate into the airspace of Pakistan at 3 o'clock in the morning. This is the place which is called Balakot. This turned out to be obviously nightmare for them. When we realized these were the aeroplanes, which I said 24 in number, fully loaded with a lot of weaponry. This is the damage that it caused. We are quite familiar with that. In retaliation, the very next day, that was a bad day. मेरे लिए as an Air Force officer बड़ा मुश्किल दिन था पूरा 26 का, because people were calling me, friends, families, relatives, media, Air Force किधर से हो रही है. So the very next day we took upon a challenge on this aircraft. We went in, and I have flown over 1,000 hours in this aircraft. We penetrated deep into the enemy and created significant damage, and obviously a curtailed one. This is a kind of pictorial thing, graphic to make you aware. लेकिन जब मैं ये बात करता हूँ तो most of the children that I talk about, मैं उनसे पूछता हूँ कि ये जो जहाज़ मारा गया था हिंदुस्तान का, और even sometimes the children ask me कि ये मिसाइल कितनी देर में मारा होगा. And obviously the children most of the time tell me that 1-2 मिनट में मिसाइल लग गया होगा. तो मैं उनसे पूछता हूँ कि इसका मतलब है कि हमने दुश्मन का जहाज़ हमारे पायलट ने 1 मिनट या आधे मिनट में मारा होगा. And I tell them you're wrong. I tell them कि हमने ये जहाज़ या उस पायलट ने ये जहाज़ 10 साल और 30 सेकंड में मारा था. 10 साल वो पायलट ट्रेनिंग कर रहा था with a passion, with a commitment, with a dedication,
developing the skills that when the time comes, even if the enemy is equipped with a similar equipment and the weapons, I will shoot him first. Because let's be aware that it was hardly a matter of milliseconds that the Indian aeroplane could have fired his first missile on our aircraft. So this is what happens. There is a price tag of taking the victory on. एक और मैं मिसाल देने के बाद कंक्लूड करूंगा कि मैंने आपको ये एयरफोर्स की क्यों मिसाल दी है. Here is a name flashed. तस्वीर मैंने इसलिए लगा दी है कि मोस्टली नाम फेमिनिन है, अलीशा ग्रे. So somebody might mix it. And my question will not be obviously at all targeted at the first two lines. I will be targeting the youth to make them interactive with me. Can anybody tell me at the back who the gentleman is? Anybody has ever heard of him? No. Okay, let me give you another face. Everybody recalls? Yes, everybody recalls. Graham Bell made a telephone. 1880 में Graham Bell was 29 years of age. He invented telephone. उस ज़माने में पेटेंट करवाना पड़ता था, आपको रजिस्टर करवाना पड़ता था कि मैंने ये ईजाद किया है, तो इट मस्ट बी रिकॉर्डेड विद माई नेम फॉर सेंचुरीज एंड टिल द टाइम दिस अर्थ इज और दिस यूनिवर्स इज देयर, माई नेम विल बी रिकॉर्डेड. तो ये अपना 29th बर्थडे, लाइक ऑल फादर इन लॉज आर वेरी गुड, हिज फादर इन लॉ वाज टू गुड, सो ही गेव हिम मनी टू गेट इट. ही डिडंट हैव मनी टू गेट हिज पेटेंट रजिस्टर्ड. उसको उसने पैसे दिए कि ये अपना पेटेंट करवा लो. जब ये पर पेटेंट करवा के निकला, उसके 2 घंटे बाद ये शख्स उस रजिस्ट्रेशन ऑफिस में दाखिल हुआ. एंड ही सेड कि मैंने अपनी एक इन्वेंशन रजिस्टर करवानी है. और उन्होंने कहा क्या? उसने कहा टेलीफोन. एंड दैट इज़ हाउ ही वाज टोल्ड दैट दिस हैज़ ऑलरेडी बीन रजिस्टर्ड कपल ऑफ आवर्स बैक. टिल टुडे द वर्ल्ड डज नॉट रिमेंबर अलीशा ग्रे एंड वी ऑल रिमेंबर ग्राहम बेल. पहली मिसाल जो मैंने जहाज़ों की दी आपको और टेलीफोन से दी, इन दोनों में मैंने ये साबित करने की कोशिश की है द वर्ल्ड डज नॉट रिमेंबर्स द रनर्स अप. द प्रोफेशन दैट आई कम फ्रॉम, आर रनर्स अप वाज अभिनंदन. आर पायलट could have either shot him or he should have shot him. So there is no price tag for the runners up in this world. That's the mentality, that is the attitude that we have to have for the life. Only then we will be able to do something better. Through my little life experience, the Pakistan Air Force taught me the armed forces, training and whatever, and some corporate experience after the retirement and some teaching, I will try and justify this topic. But before I say anything further, let me prove to you that leader has to be obviously a winner most of the time. So what is the difference between leader and a winner? पहले मैं ये पूछता हूँ लीडर होता कौन है. I don't want to take your test or something like that. If you Google, there are about 1400 definitions on the internet about the leader. Who is a leader? लीडर की मैं अभी आपको शायद दर्जनों मुझे याद हैं, शायद मैं वो भी सुना सकता हूँ. But for understanding, to proceed further, let me say a very simple word. Leader is a person who makes others do what he wants them to do and makes them think they are doing it because they want to do it. लीडर वो शख्स है जो दूसरों से वो करवाता है जो वो चाहता है वो करे, मगर करने वाले ये समझते हैं कि हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इसे खुद करना चाहते हैं. Now the question is, how do you recognize the leader? How do you recognize the people amongst us who are the leaders? लीडर की सबसे बड़ी निशानी ये होती है जी, people have trust in him or her. Now trust is a very simple word. बड़ा सादा लफ्ज़ अगर आप बोलने में देखें, लेकिन मैं किसी बच्चे से, यंगस्टर से कहूँ कि कैन समबडी एक्सप्लेन व्हाट इज अ ट्रस्ट, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट.
Because trust is something not measurable, less explainable. But let me put the right things right, because with the paucity of time, we'll have to keep moving. Trust, to my mind, is giving someone the ability to damage or destroy us or our reputation with a belief that he or she will not use this option. किसी पे इस हद तक एतबार करना कि उसकी ये सलाहियत बना देना कि मुझे डैमेज या मेरी रेपुटेशन को डैमेज कर सके, लेकिन इस एतमाद और ईमान के साथ कि वो ये ऑप्शन यूज़ नहीं करेगा. That's trust. And that's you have in the leaders, the true leaders. I'm not talking about our political situation. I'm talking about a leader. To be a leader, you got to choose to be extraordinary. How do you choose to be extraordinary? एक चीज़ याद रखिएगा जी, मैं youngsters के सेंस में कह रहा हूँ. Please always, whenever I talk about the audience, I'm talking about the youngsters. The life does not give you what you need or desire. The life will invariably, mostly give you what we deserve. जिंदगी हमें वो नहीं देती जो हमारी ख्वाहिश होती है. जिंदगी हमें वो देती है जिसके हम हकदार होते हैं. And to deserve more, you have to be more valuable. And what do you do to be more valuable? You should have the capacity to solve bigger problems. Simple, 3 चीज़ें. मैंने कहा है, the life does not give you what you desire. The life gives you what you deserve. And to deserve more, we have to be more valuable. And to be more valuable, you have to have the capacity to solve bigger problems. इस पे अगर हमें समझ आ गई है, तो obviously some of you may ask me कि वो how is this topic relevant to me? मेरे लिए इससे क्या ताल्लुक़ है? Why should I learn and what can I do with this subject? उनके लिए मैं कहूँगा, the greatest discovery of our generation is that human beings can alter their lives by altering their attitude of mind. So that brings me to the point that ultimately it is the state of the mind that you have to change. Pehla, checklist. It is all a suggestion. It's nothing that I think that I'm more qualified, not at all. It is my recommendation that you need to raise the bar if you want to be more valuable. जैसे मैंने कहा, valuable होने के लिए you have to have the capacity to solve more problems. सबसे पहले raise your bar. Sports वाली bar, athletics वाली bar. उसके लिए you must convert your should into must. I should be a doctor. I should be an engineer. I should be a military officer. Much is wanted and much is left to the imagination. And when I say I must be a doctor, I must be a military officer, I must be an engineer. चीज़ों को सिंप्लीफाई करने के लिए हुजूर मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ ये स्क्रीन के ऊपर. ये अभी आप लोग लिफ्ट से आए हैं, इसी तरह का आपने एक बटन दबाया था and it brought you up. How many of you noticed that there is something in the dots down below, all the figures? And obviously you all know that this is for blinds. If a person who has an eyesight, God forbid he goes blind, how much time will he take to learn all this? Because he has to convert his should into must. Now there is no need for me to go and find out what is 1 and what is 2 and 1 is 3. But if I lose my eyesight, it will take me days, not months, to learn which floor is it. That means I converted my should into must. That's what we are.
रिकॉर्ड अगर आप गूगल करें हुजूर तो देयर इज़ अ स्पोर्ट्स एंड देयर इज़ अ स्पोर्ट्समैन. स्पोर्ट्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, स्पोर्ट्समैन का नाम भी बाद में बताऊंगा. 5 years and 8 months that sportsman was unbeaten in any sports of the world. This is a world record. 555 matches not beaten. 555 matches. 5 साल 8 महीने. All sports. I'm not talking about squash. This is the player. When I was a young officer, I was posted in Peshawar. Peshawar is the home of these squash players. They didn't have their own squash court. We had a common squash court. ये Air Force वाला use किया करते थे squash court. When we would walk through the squash court, हमारे mess में और जहाँ resident area था और dining hall के दरमियान में squash court था. हम सुबह 6 बजे 5:30 बजे भी फ्लाइंग के लिए जाते थे तो ठक ठक की स्कॉश कोर्ट की आवाज़ें आ रही होती थी. पता करते थे कौन खेल रहा है. उन्होंने कहा कोई जहांगीर लड़का है. हम फ्लाइंग करके दोपहर तपती सुबह 5 बजे के गए होते, 12-1 बजे वापस आते थे. स्कॉश कोर्ट से ठक ठक दीवारों को कूटने की आवाज़ आ रही. कौन खेल रहा है? जहांगीर खान. व्हेन आई मेट हिम, इसने मुझे बताया कि एट द एज ऑफ 13 इसके बड़ा भाई को ड्रीम था दैट इज यंगर ब्रदर शुड बी द वर्ल्ड चैंपियन. कहता है मुझे इंग्लैंड ले गया. 13 साल की उम्र में लंदन के माइनस टेम्परेचर -13-14 में. कहता है सुबह 4 बजे उठ के मैं 16 किलोमीटर दौड़ लगाता था. मैं आपको सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि जब मैं इसको स्क्वाश खोलते वैसे देखता था, शाम को ये हमें 2 ऑफिसर इकट्ठे चले जाते थे स्क्वाश के लिए, तो कहता था आप दोनों एक तरफ हो, मैं अकेला आप दोनों की बॉल उठाऊंगा. दैट्स अ पैशन दैट ही हैड. लेकिन अगर आप स्क्वाश कोर्ट वैसे किसी बच्चे से पूछें तो वो कहेगा इसकी क्या मेहनत है, इसके मसल्स अच्छे होते होंगे, इसका स्टेमिना अच्छा होगा, ये दौड़ता अच्छा होगा, ये थकता नहीं अच्छा होगा, डाइट अच्छी खाता होगा इसलिए चैंपियन बन गया. बट हाउ मेनी ऑफ अस नो दैट टिल द एज ऑफ 12 इसके 2 हर्निया के ऑपरेशन हुए. हाउ मेनी ऑफ अस नो 8 साल की उम्र तक जहांगीर खान बोल नहीं सकता था. इसकी माँ डॉक्टरों, हकीमों, पीरों के पास ले जाती थी, तेल पिघला पिघला के कान में डालती थी क्योंकि सुनेगा तो बोलेगा. हर्निया के ऑपरेशन की वजह से वालिद को डॉक्टर ने कहा था कि स्क्वाश कोर्ट के सामने से भी ना गुजरे. दैट्स द पैशन दैट ही हैड. व्हेन ही वाज एट द पीक, all sports magazines and the journalists of sports agreed that he is the fittest man of the universe. Nothing comes for free. He raised his bar simply. Ladies and gentlemen, we all born and we have to go through one of the pains. All human beings. Either the pain of discipline or the pain of regret. जो इंसान पैदा हो गया है, he has to choose one of the pains. The pain of discipline is what you are all going through now. You all left your homes, you left your commitments, you left socializing, you left your sports if you were playing in the evening, especially General Saab that I know, he left his golf today. More grateful to him. So what have you gone through? You've gone through the pain of discipline to interact and maybe learn a few one-odd idea from a person like me. If you don't choose to go through the pain of discipline, you've got to go through the pain of regret. I wish I would have worked hard. I wish I could have gotten more numbers. I wish मैं पढ़ाई में टाइम ज़ाया ना करता. वो मेरा दोस्त सर्जन लग गया है, मेरा दोस्त कर्नल लग गया है, मेरा दोस्त इंजीनियर बन गया. यार मैंने ज़ाया किया. The pain of regret will live with you for the life. The pain of discipline is short-lived. Please remember. Ask the people who are the high achievers sitting in the front. They have forgotten that the pain they went through. They cherish the hard work that they went through, that they did and they put in. Muhammad Ali boxer, one of my favorite sportsmen. My apology, मैं 2-3 दफ़ा जिक्र करूँगा आज इसका. मैं जब इसकी और स्पेशली पीपल सिटिंग इन द फ्रंट वुड क्लियरली रिमेंबर जब इसका लाइव आया करता था अमेरिका से.
और दिन को होता था तो यहाँ 2 बजे होते थे, वहाँ 2 बजते थे, तो यहाँ उल्टा टाइम हुआ था, तो हम जाग के नया नया लाइव शुरू होता था, देखा करता था। 6 फुट 3 इंच का आदमी है, फुल ऑफ मसल्स, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ स्विफ्टनेस। मैं जब तक बड़ा नहीं हुआ मैं समझता था कि यार अल्लाह ताला ने इसको मसल्स इतने दिए हैं, इसकी बॉडी ऐसी जालिम है, मुक्का मारता है, पावर इतनी गिरा देता है, बात ख़त्म। नहीं सर। मोहम्मद अली बॉक्सर से किसी ने एक दफ़ा पूछा ट्रेनिंग के बारे में, तो क्या कहता है? कहता है, आई हेटेड एवरी मिनट ऑफ ट्रेनिंग बट आई सेड टू माई सेल्फ, सफर नाउ एंड लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ एज चैंपियन। We got to suffer now if you want to make the life for ourselves, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, you got to choose. Prioritize what you want now or what you want the most. Sometimes we are carried away with the things that we want now and we compromise on the things that we want the most. Choose to do more than what you did yesterday. That's the thumb rule if you want to raise your bar. Why? जैसे मैंने आपसे पहले कहा, you have to raise the bar every day. If you are consistently doing, please remember, if you continue, ये बात मैं जोर दे के कहना चाहूँगा, especially to the youngsters. If you continue to do what you're doing, you will continue to get what you're getting. अगर आप वही करते रहेंगे जो कर रहे हैं, तो आपको वही मिलता रहेगा जो मिल रहा है. You got to do more than what you did yesterday. Only then you will have. Number 2, come out of the self-pity syndrome. Unfortunately, हमारी opportunities एक जैसी नहीं मिलती. सिफारिश भी है, पैसा भी है, रिश्वत भी है, सब कुछ है. But then, are we reminding ourselves that I should not fall prey of this syndrome? कि यार तुमसे मजलूम कोई नहीं है, तुम्हारी सिफारिश भी कोई नहीं है, तुम कैसे बनोगे? आपके सामने मैं proudly कहना चाह रहा हूँ कि there are a lot of institutions in this country which do not accept सिफारिश, and especially that I belong to, the armed forces. I didn't have a सिफारिश. मेरे दूर दराज ख़ानदान में कोई फ़ौज में नहीं गया था. What to talk of a fighter pilot? Okay. Stop blaming others. सेल्फ पिटी के सेंस में मैं कह रहा हूँ, सेल्फ पिटी के सेंस में. स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स. वाई? प्लीज रिमेंबर, इट मे बी देयर फॉल्ट बट इट इज योर प्रॉब्लम. देयर इज अ डिफरेंस. अगर मैं दरिया के किनारे खड़ा हूँ और मुझे कोई धक्का दे दे और मुझे स्विमिंग नहीं आती, कसूर बेशक उसका है, डूब मैं रहा हूँ. तो जब तक आप ये ओनरशिप नहीं करेंगे एंड यू स्टार्ट फाइंडिंग द ब्लेम कि किसको शिफ्ट करना है, सफरर तो आप हैं अभी भी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है. हम कहते हैं मोस्ट ऑफ द यूथ, सब मैं बात करता हूँ, मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता भी हूँ, विजिटिंग भी, पाकिस्तान बाहर भी मैंने दिया, तो बाहर के तो लोग नहीं कहते, हमारे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम कहते हैं हम हेल्पलेस हैं. माई डियर यंग गर्ल्स एंड बॉयज़, प्लीज़ नो व्हाट इज़ हेल्पलेसनेस. हेल्पलेसनेस ये थी 1947 में, when our ancestors migrated. हेल्पलेस ये थी कि जब ट्रेन में 10,000 लोग आते थे, 10,000 में से 5,000 जिंदा पहुंचते थे, 5,000 डेड बॉडीज पहुंचती थी, और ट्रेन का फर्श खून से लदा होता था. हेल्पलेसनेस ये थी. हेल्पलेसनेस देखनी है तो फ़लस्तीन देखें, इसी तरह का फाइटर जहाज़ मैंने उड़ाया हुआ है. नीचे ज़मीन पे देखें, कोई सिविलियन पॉपुलेशन है, कोई कंटोनमेंट नहीं है, कोई छौनी नहीं है, कोई आर्मर नहीं है, कोई एयरफोर्स का बेस नहीं है जिस पे बॉम्बिंग हो रही है. दिस इज कॉल्ड हेल्पलेसनेस. सो सेल्फ पिटी मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा हूँ, ज़मीन पे जो कुछ बीतती है इस तरह का होता है, और जो कुछ बचता है वो ये बचता है. दिस इज हेल्पलेसनेस. सो इट्स अ रिलेटिव टर्म. वेयर डू यू वांट टू ट्यून और एडजस्ट योरसेल्फ, दैट एम आई द विक्टिम. ये बच्चा इससे तो हम सारे जो इस हॉल में बैठे हैं ज़्यादा प्रिविलेज हैं. इस बच्चे को जो इस मुल्क ने दिया है, ये तो फिर भी पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है. इस मोची से तो ज़्यादा हम प्रिविलेज हैं.
जो 14 अगस्त की खुशी में जूते मुफ्त मुरम्मत कराएगा बैनर लगा के बैठा हुआ। सो इट्स अ रिलेटिव टर्म। नंबर 3, चेंज योर लिमिटिंग बिलीफ्स। ये जो शख्स या ये जो खातून है, ये केटू के अगर पहाड़ पे खड़े हैं तो मैं बिलीव करता हूं कि इसने केटू सर नहीं किया, इसने तन आसानी को सर किया है, इसने सुस्ती को सर किया है, इसने लेथार्जी को सर किया है, इसने एक कंफर्ट को सर किया है। लिमिटिंग बिलीफ ये थे हम सब इंसानों के 1953 तक, बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 70 साल पहले। आप हैरान होंगे अगर आपको नहीं पता, 1953 तक, सॉरी अगर मैंने 93 कहा, 1953 तक, 1953, ह्यूमन बीइंग्स बिलीव्ड कि 4 मिनट में 1 मील का फासला नहीं भागा जा सकता। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स, हमारे फेफड़े, हमारे ब्लड प्रेशर, हमारा ब्रेन विल गिव अवे। फेफड़े फट जाएंगे, सांस उखड़ जाएगा और ब्लड सर्कुलेशन और या ब्रीदिंग की वजह से एवरीवन विल डाई। जो 4 मिनट से कम में भागने की कोशिश करेगा, ये हज़ारों साल जब से दुनिया बनी है यही हो रहा था। 1953 में एक शख्स उठा, मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने कहा आई विल रन। रॉजर बेनेस्टर फ्रॉम इंग्लैंड, न्यूरोलॉजिस्ट बना बाद में। इसने कहा आई विल रन। एवरीबडी टोल्ड हिम दैट यू वर गोइंग टू डाई, दिस इज अ सुसाइड। ही सेड नो, आई विल स्टिल रन। 3 मिनट 59 सेकंड में 1953 में पहली दफ़ा ये शख्स भागा एंड सक्सीडेड इन किलिंग दिस मिथ कि भाग नहीं सकते। लेकिन स्टोरी यहाँ ख़त्म नहीं हुई, प्लीज़, स्टोरी यहाँ से शुरू हुई है। सदियों का रिकॉर्ड जब से इंसान बना है, इसने पहली दफ़ा ये तोड़ा, इसका रिकॉर्ड 40 दिन में किसी ने तोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक स्पोर्ट्समैन ने तोड़ दिया। एंड आई एम प्लीज टू रिपोर्ट टू यू दैट 25,000 ह्यूमन बीइंग्स हैव क्रॉस्ड दिस माइलस्टोन सिंस दिस जेंटलमैन डिड। क्यों? They change the limiting beliefs that he can do it, I can do it too. ये Tony Robbins, I read him, I listen to him. He says where the focus goes, energy flows. Limiting beliefs के सेंस में बात करने लगा। मैं एक ज़ाती एक्सपीरियंस, आई थॉट ऑफ इट पहले शेयर करूं, बट मैंने कहा ये ज़रूर शेयर करूंगा, स्पेशली फॉर यंगस्टर्स। आई यूज़ टू फ्लाई दिस एरोप्लेन, ज़मीन पे क्विक मैं करूँगा ताकि आप बोर ना हो, ज़्यादा मिलिट्री टर्म भी नहीं यूज़ करने की कोशिश करूँगा। ज़मीन पे लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, उसके आगे टारगेट होता था जिसके ऊपर हम फायर करते थे, अपनी बुलेट्स फायर करते थे। वो तकरीबन मेरे ये बाजू जितनी एक बुलेट होती थी, 30 मिलीमीटर्स की। और जब ये बुलेट फायर करते थे तो ज़ाहिर है उसको जाके टारगेट में लगती थी। जो हम सादा लफ्ज़ों में जो खोखा होता था, उसका खोखा जब फायर ख़त्म होता था तो ज़ाहिर है एक ठेकेदार के बंदे आते थे, वो खोखा इकट्ठा करते थे और कबाड़ में जाके बेच देते थे। 4 जहाज़ हम इस तरीके की फायर करते थे जो आपको नज़र आ रहा है कि ये टारगेट लगे हुए हैं। हम यहाँ से आते थे, फायर करते थे और अब मुड़ जाते थे। बारी बारी हमने एक पैटर्न बनाया हुआ था रेक्टेंगल, और बनाते हैं सारे पायलट, इसी तरह ट्रेनिंग करते हैं। यहाँ येलो बॉक्स के अंदर एक छोटी सी बिल्डिंग है, हट है, इसके अंदर एक और पायलट बैठा होता है ज़मीन के ऊपर। ही इज़ आर कंट्रोलर, ही इज़ कंट्रोलिंग आर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई वायलेशन ना करे या कोई आगे एनिमल्स ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए जिसको, तो वो फायरिंग की इजाज़त देता है या रोकता है। तो आई डिड बोथ, मैंने ये भी काम किया और ऑब्वियसली केबिन के अंदर रेंज सेफ्टी ऑफिसर का भी काम किया। बट आई एम अबाउट टू शेयर विद यू, ये पीछे आपको एक नाला नज़र आ रहा है, ये पेशावर की मैं बात कर रहा हूँ, जमरूद के पास। ये पीछे ड्राई सा नाला नज़र आ रहा है, इसके पीछे गांव थे। उस गांव के बच्चों को पता लग गया कि जो जहाज़ मार के जाता है, फायर करता है, खोखा गिरता है, वो ठेकेदार के बंदे आके बड़ा महंगा बेचते हैं, तो ये बड़ी कमाई है। लेकिन वो उठाएं किस वक्त? जहाज़ फायर करेगा, जो ही वो निकलेगा तो ठेकेदार की गाड़ियाँ आ जाएंगी। उन्होंने कहा द बेस्ट अपॉर्चुनिटी इज़ टू पिक इट अप इन बिटवीन द 2 एयरक्राफ्ट फायर। Can you imagine? You cannot imagine. Believe you me, I was sitting in the star and I was scared as a fighter pilot. यार, this cannot be done. क्योंकि एक जहाज डाइव में जा रहा है, वो फायर खोलता है, उसके बाद दूसरा टर्न कर रहा है, एंड बाय द टाइम दिस एयरक्राफ्ट ओपन्स फायर, दूसरा डाइव में आना शुरू हो गया। इट वॉज अ मैटर ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स।
छोटे छोटे बच्चे एक ड्राई नाला के अंदर, नाला खुश्क नाला, यहाँ तक सर निकाल के बैठे हुए हैं वेटिंग फॉर दिस एयरक्राफ्ट। उनको ये पता था कि जब ये जहाज़ नाक ऊपर कर लेता है अब ये फायर नहीं करेगा, और वो जहाज़ जब इतना फासले पे आता है ना, इतना करीब ज़मीन के आता है, वहाँ से फायरिंग शुरू करता है। उनकी ऑब्जर्वेशन देखें, एंड बिलीव यू मी दे वुड डैश रन फॉर देयर लाइफ बिहाइंड द टारगेट जो फायर हुआ है। वो बुलेट इतनी स्पीड पे निकली होती थी, गोली के गर्म होती थी, वो अपनी झोली उठाता था, वो 2-3 खोखे जितने डाले, by the time it would run back, and by the time the next subsequent aircraft would fire, they would jump into the nala to save their life, क्योंकि इतनी बड़ी बुलेट कुछ नहीं बचना था उसका। And they were doing it invariably every day, probably dozens of times in a day, because they changed their limiting beliefs. I could not do it. That's the passion that you have. It. Look at the target setting. मैंने जो आपको शुरू में बताया ये वाली इसलिए। Okay. Share with you that how do you change the limiting belief? What is not replaceable by others. That's the fourth option. हमारे ज़माने में, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, गुड इनफ, बिलीव यू मी, ऑन द लाइटर नोट मैं कह रहा हूँ कि आजकल बच्चा 93% नंबर लेके आता है तो मेरी भाभी मेरे भतीजे को ज़बरदस्त डांट रही थी कि तुम पागल, तुम बेवकूफ़, 95 से तो दाखिला मिलना था मेडिकल में। तो मैं इधर उधर छुपता फिर रहा था कि वो बच्चा मेरे से ना पूछ ले कि आप बड़े जहाज़ पायलट बने हुए हैं तो आपके कितने नंबर थे, क्योंकि हमारे ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न होती थी विच वॉज 60%, और 60 से ऊपर आप डूडियाँ डालें, वालदैन आपको ना सिनेमा जाने से रोक सकता क्योंकि फर्स्ट डिवीज़न ले लिए। वो ज़माना था विद लिटिल कंपटीशन। अब 93% वाले को माँ गालियाँ दे रही है। सो यू गॉट टू चेंज, दिस इज़ नॉट वैलिड एनी मोर, यू गॉट टू। ये शख्स, येट अगेन आई एम कमिंग बैक टू दिस, आई हैव लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम हिम। ये जिन लोगों को याद होगा, यंगस्टर ने शायद ना देखा हो, सीनियर लोगों को याद होगा, जब ये मोहम्मद अली बॉक्सर रिंग में जाता था, 6 फुट 3 इंच का आदमी डांस करता था जाके अपने ओपोनेंट के सामने, उसको चिढ़ाता था, ही वॉज जंपिंग। आप इमेजिन करें, लाइट्स ऊपर जल रही है, इसको जेहन में रख के देखिएगा क्या कहता है वो। कहता है द फाइट इज वन और लॉस्ट फार अवे फ्रॉम द विटनेसेस, बिहाइंड द लाइन्स, इन द जिम एंड आउट देयर ऑन द रोड्स, लॉन्ग बिफोर आई डांस अंडर दोज लाइट्स। He's done the job. वो कहता है लड़ाई हारी या जीती जा चुकी है जब मैं डांस कर रहा होता हूँ लाइटों के नीचे। That's, are we doing it? हम तो आखिरी दिन कर रहे होते हैं कि इम्तिहान कर ले तो करते हैं। Ladies and gentlemen, I want to ask you a very basic question. What is the difference between human beings and animals? Any youngster can answer, ताकि मैं one-sided बोलता ही ना रहूँ। हो सकता है somebody may have a brilliant idea. Can somebody, youngster wants to add what is the difference between human being and animals? No issue? No attempt? Okay, let me tell you. Yes, there is one. Yeah, there is. Yes, please, very good. Very nice. I'll be very close to what you said. Ladies and gentlemen, the biggest difference between human beings and animals is that human beings have dreams and ambitions. एक जंगल का शेर भी पैदा हो जाए तो उसका ये एम्बिशन नहीं होता कि मैंने क्या करना है। हॉर्स बॉर्न, अ डॉग बॉर्न, अ कैट बॉर्न, डू दे हैव एम्बिशन? नो सर। दे आर बॉर्न, दे ग्रो अप, दे रिप्रोड्यूस, दे डाई। सिर्फ इंसानों के अंदर है दैट वी गॉट टू हैव एम्बिशंस। तो हमारे, मैं सिंपल लफ्जों में ये कहना चाहूंगा, प्लीज रिमेंबर ओनली ट्रीज डू नॉट चेंज देयर पोस्टल ड्रेस। आज आप एक दरख्त लगाएं, 100 साल बाद आए वहीं खड़ा होगा। मैं पोस्टल एड्रेस प्लीज उस सेंस में ना ले, मैं किसी शहर को कह रहा हूं या किसी गांव को कह रहा हूं। वी गो टू मूव, वी कांट स्टे। इफ यू स्टे वी आर ऑलमोस्ट गोइंग क्लोज टू द एनिमल्स, बिकॉज दे डोंट हैव एम्बिशन, दीज ट्रीज डोंट हैव एम्बिशन। ही हैज टू जस्ट ग्रो बिकॉज ही इज टू बी फेड वाटर, इट ग्रो। हम नहीं है, इंसानों में ये फर्क है। जब मैं कैडेटशिप भर्ती होने गया जी लोअर टोपा में, तो वहाँ ये लिखा हुआ था, मैं उस वक्त तो बिल्कुल समझ नहीं आई, काफ़ी सारी अंग्रेज़ी भी पैदल थी एफएससी करके,
तो पहले तो स्वीट पढ़ लिया हमने जाके, द मोर यू स्वीट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो मैं कहा यार ये स्वीट और पीस भी, पीस में स्वीट होता होगा, मिठास है। बाद में रगड़ा लगा तो समझ आई, द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। आपके सामने। फिर आप कहेंगे फौज की मिसाल देते हो, तो मैं सिविल की मिसाल दे देता हूँ। इट इज़ वॉट यू प्रैक्टिस इन प्राइवेट you will be rewarded for in public. Pick up any boxer, pick up any sportsman, pick up anybody. बोर्ड का बच्चा जो टॉप करता है उससे पूछें, मीडिया जब उसका इंटरव्यू कर रहा होता है, इज डन द होमवर्क। नंबर 5, डेवलप द पावर ऑफ पॉजिटिविटी। अपने अंदर ये जरूर करें, नेगेटिविटी को ओवरकम करें। एनीबडी यंगस्टर्स में से हैव यू एवर हर्ड द नेम ऑफ रॉबर्ट फुल्टन? एनीबडी? मैं ये भी चेक करना चाहता हूँ कि सर मेरा कहीं तो हाथ पड़ गया रॉबर्ट फुल्टन पे, या शायद मेरे से ज़्यादा पढ़ लिखे। एनीबडी हुज एवर हर्ड ऑफ दिस नेम रॉबर्ट फुल्टन? ओके, नो इशू। रॉबर्ट फुल्टन वॉज द वन हु मेड दिस पावर्ड शिप। उससे पहले मैनुअल चक्की वाला होता था, वो जो लेबर करती थी, चप्पू चलाने वाला। ही वॉज द फर्स्ट वन हु इन्वेंटेड द पावर्ड बोट कह लें या शिप कह लें। ये स्टोरी क्यों सुनाने लगा हूँ मैं आपको? वो इसलिए कि जब इसने बना लिया, इसने पूरे शहर में धूम दिया कि जी मैंने शिप बना लिया, तो वो पावर से चलेगा, हमने किसी इंसान ने नहीं देखना, वो खुद चल पड़ेगा। तो लोग आके खड़े हो गए वहाँ पे दरिया के किनारे, एंड नाउ द पीपल वर लाइक वी आर, मोस्ट ऑफ अस आर। तो बाहर खड़े होकर लोगों ने क्या नारा लगाया होगा? दिस विल नॉट मूव, दिस विल नॉट मूव। क्योंकि हमारे माइंड सेट है कि ये कैसे कर सकता है कि चीज़ खुद ही हिल रही है। और जब चल पड़ा, द सेम पीपल स्टार्टेड सेइंग समथिंग डिफरेंट। नाउ कैन समबडी गेस? जी, चल तो पड़ा है, चल ओके ओके, लास्ट उन्होंने कहा ये रुकेगा नहीं। भाई इसको रोकेगा कौन? बस चल रही है चीज, इसको ब्रेक कौन लगाएगा? पानी के अंदर चल रही है। मैं कह रहा हूं दिस इज द माइंड सेट हम लोगों का, ये है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। सिर्फ इसलिए मैंने आपसे ऐसी स्टोरी शेयर की। चलें फिर एक छोटा सा एक आपको इन्वॉल्व करें। मैंने तो आपसे कहा था ये इंटरेक्टिव है, मैं तो कुछ नहीं करता, आई जस्ट वांट टू। एट व्हाट एज डज अ ह्यूमन बीइंग ऑपरेट एट जीनियस लेवल? कैन एनीबडी? तुक्का तो मार सकते हैं आप लोग। एनीबडी? यंगस्टर्स को कोई फिगर मार दे, ऐसे तुक्का मारे जी। जी प्लीज। 35 एक एक कर। यस उमर? ओके, एनीबडी एल्स? 35 Anybody else? Okay. The human mind operates at genius level at the age of 4. 04. By the time a human being, ये scientific है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है. By the time, thank you Umar. By the time the human being reach at the age of 20, he is using 10% of what he was using at the age of 4. And he or she uses only 2% by the time he reaches at the age of 30 plus. तो आप देख लें कि हम कितने परसेंट पे आप सारे हम लोग, मेरा ख्याल है माइनस में ना चले गए हों, बट जस्ट अ थॉट। अच्छा, इसकी रीज़न क्या है? चले मुझे एक और डाटा याद आ गया, इससे तो रिलेटेड नहीं है। डू यू नो ह्यूमन माइंड बाय द टाइम, खान साहब, अ चाइल्ड रीचेज एट द एज ऑफ 15, he or she has heard the word no. नहीं करना, मत करो, ये कैसे कर रहे हो, ये तुम कैसे करोगे? 15 साल की उम्र तक जब बच्चा पहुंचता है, वो बच्चे ने 1.5 लाख दफा नो सुना होता है। मत करो, तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की बात नहीं, ये this. And by the time a child reaches the same age, 15, he or she has heard word yes, you can do it. How many times? 5,000 times. 1:30 की ratio है. So we are the people telling children not to do it. How can you do it? And that builds up the mindset of the child. 6 total 8 हैं जी, बस we are left with inshallah 2, and मुझे जो time दिया गया, I'll honor that, sir. Please याद रखिए, the time can be better managed but not enhanced.
कैसे मैं साबित करने की कोशिश करता थ्रू एन एग्जाम्पल। रोमन एम्पायर में जब सिपह सलार एक जंग जीत के आता था तो बादशाह का ये हुक्म था कि उसको पूरे शहर में घुमाया जाएगा, सड़कों के ऊपर पूरे कॉन्वॉय के साथ, काफले के साथ, फौजी मिलिट्री सोल्जर्स जो टॉप लीडरशिप थी उनके साथ। लोग साइडों पे खड़े होते थे क्योंकि वो मुल्क जीत के आता था या फतह करके आता था, तो उसके ऊपर फूल फेंकते थे, पत्तियां करते थे, फेंकते थे, कसीदे गाते थे और उसको वाह वाह करते थे। स्टोरी यहां से शुरू होती है। नाउ यू लुक क्लोजली इन दिस पिक्चर इन द सर्कल, उसी सिपह सलार जो बग्गी पे सवार है और शहर में घुमाया जा रहा है, वाह वाह हो रही है, देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग बिहाइंड दैट सिपह सलार। वो मिलिट्री कमांडर के पीछे एक बंदा खड़ा किया, उसके कान में कुछ कह रहा है। यू नो व्हाट वाज दैट? द पर्सन वाज saying memento mori in Roman, and the person was also saying carpe diem. Memento mori means you're mortal. तुम फानी हो, you're going to die. And the reason? Two reasons. One, that जो करना है काज गुजरो, the clock is ticking. And number two, he was told कि ये किसके दिमाग में ये फतह सवार ना हो जाए। दो reasons. That is why it was followed by carpe diem means live every moment. यही हमारे पास ऑप्शन है। अगर मेरी उम्र में एक मुझे कोई कहे कि यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, इज इट अ कॉम्प्लीमेंट और इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट? एंड आई वुड से इट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। व्हाई? टैलेंट इज द पोटेंशियल दैट आई हैव। एट माई एज अगर मैंने ये पोटेंशियल अभी तक नहीं इस्तेमाल किया तो शेम ऑन मी। दैट मीन्स आई हैड समथिंग, आई कुड सिंग, आई कुड राइट, आई कुड डू एनीथिंग, लेकिन मैंने अभी तक अगर नहीं किया एंड समबडी टेल्स मी यू हैव लॉट ऑफ टैलेंट, दैट्स नॉट अ कॉम्प्लीमेंट। तो लेट्स नॉट वेट till my age, the youngsters, to reach, and then somebody telling you you have a lot of talent. Use it now. It is a good compliment, but you have limited time. You got to use it now. Today, I'm talking to the young people. Don't let somebody tell you at the age of 50, 60 or 70 that you have a lot of talent. Number 7, be emotionally contagious. Contagious होता है जैसे हमें नज़ला ज़ुकाम एक दूसरे से लग जाता है। नज़ला ज़ुकाम ज़रूर लगता है, बट हम कभी इमोशनली भी किसी के साथ पॉजिटिव हुए हैं? Somebody feels good in my company. Somebody feels relaxed in my company. कोई मेरे साथ आके अपना दुख भूल जाता है, कोई मेरे साथ आके अच्छा मशवरा कर लेता है। कभी सोचा हमने? नहीं सोचा या कम सोचा। स्टीव जॉब, आई फॉलो हिम अ लॉट, सुपर्ब व्हाट ही सेड। मैं ग्राफिक खुद शौकीन हूँ, तो ये स्लाइड मैं इस तरह सारी खुद ही बनाता हूँ। आई जस्ट रेड इट एंड आई मेड इट, कन्वर्टेड इनटू स्लाइड। ही सेड यू आर लव्ड व्हेन यू आर बॉर्न, यू विल बी लव्ड व्हेन यू डाई, इन बिटवीन यू हैव टू मैनेज। आपको मोहब्बत मिलेगी जब आप पैदा होंगे, आपको मोहब्बत मिलेगी जब आप जाएंगे दुनिया से। इस दरमियान में अकबल बंदोबस्त, इट्स योर ओन चॉइस कि लोग आपसे मोहब्बत करें या ना करें। यू गॉट टू बी ग्रेटफुल टू द पीपल। हाउ मेनी टाइम्स डू एक्नॉलेज जो लोग हमारी ज़िंदगी में अच्छाइयाँ करते हैं हमारे लिए? बहुत कम, कंजूस है। मैं किसी को खाना पकाने का इसलिए नहीं कहता कि यार मेरी बीवी नाराज़ हो जाएगी कि शायद मेरा खाना अच्छा नहीं बनता घर में, किसी के खाने की तारीफ करने में। किसी को कहता हूँ यू लुकिंग हैंडसम, इसका मतलब मैं हैंडसम नहीं हूँ। किसी को कहता हूँ यू वेयरिंग सच अ नाइस टाई, आपने इतनी अच्छी पहनी है, इसका मतलब मेरे पास ऐसी नहीं है। दैट्स नॉट द केस। कॉम्प्लीमेंट करने से आपका नहीं कमी आती हुजूर। येट अनदर स्टोरी टू बी शेयर्ड एंड इट्स वेरी वेरी मूविंग। अमेरिका इतनी दूर, वियतनाम कहाँ पे? 60s में
हम सब जानते हैं कि अमेरिका ने हमला कर दिया वियतनाम पर, अपना बैरी जहाज़ यहाँ खड़े कर दिए, वहाँ से एयरक्राफ्ट कैरियर से जाके अटैक होते थे। एक पायलट थे चार्ल्स प्लम्प, ये पायलट का नाम था, ये फाइटर पायलट था। ये भी उन्हीं मिशंस में जाके इस जगह से जाके अटैक करता था। तकरीबन अपना सेकंड लास्ट इसका मिशन था, इसके बाद इसने अमेरिका रवाना हो जाना था अपनी ड्यूटी पूरी करके। तो ये एक मिशन पे गया, अपने 73वें मिशन पे, 73rd मिशन टू अटैक द वियतनामीज। वहाँ गया, वहाँ पे ये हिट हो गया मिसाइल से नीचे से। ही हैड टू बेल आउट, ही वॉज मेड अ प्रिजनर एंड स्पेंड 6 years इन द प्रिजन इन हवाई। 6 साल बाद जब ये रिहा होके वियतनाम से वापस गया अमेरिका, इस तरह का कैदी था ये। इस एज में जब ये वापस गया, सॉरी इस एज में इसने एक बात कही, वेंट आफ्टर 6 years। चार्ल्स प्लम कहता है, मैं एक दफ़ा सुबह सुबह एक रेस्टोरेंट में अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर रहा था, तो एक शख्स मुझे सामने से घूरे जा रहा था। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये मुझे जानता है या वैसे ही तंग कर रहा है मुझे। कहते काफ़ी देर बैठा रहा और मैं बर्दाश्त करता रहा। कहते थोड़ी देर बाद वो शख्स आया मेरे पास और आकर उसने कहा, आर यू चार्ल्स प्लम? मैंने कहा यस आई एम। उसने कहा यू वर इन यूनाइटेड स्टेट्स नेवी? उसने कहा यस। उसने कहा यू वर अ फाइटर पायलट? उसने कहा यस। एंड यू बेल्ड आउट इन वियतनाम थ्रू अ पैराशूट? उसने कहा यस। वो थोड़ा सा चिढ़ना शुरू हो गया कि इसको सारा कुछ कैसे पता है मेरे बारे में। उसने कहा एंड यू रिमेन द प्रिजनर? उसने कहा यस, बट हाउ द हेल डू यू नो सो मच अबाउट मी? दैट पर्सन सेड, द डे यू जम्प्ड आउट ऑफ दैट पैराशूट, I packed your parachute that day. उस दिन वो पैराशूट मैंने पैक किया था। और मजाक में उसने कहा, आई होप इट वर्कड, इट ओपनड। उसने कहा यस, दैट्स व्हाई आई एम अलाइव। चार्ल्स प्लम कहता है, मैं घर आया पूरी रात सो नहीं सका, इसलिए कि जिस शख्स ने मेरा पैराशूट पैक किया, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूं, मुझे हज़ारों दफ़ा वो मिला होगा शिप के ऊपर, टेक ऑफ से पहले, टेक ऑफ के बाद। मैंने तो उसको कभी हाथ भी नहीं लाया होगा, ना पहले ना बाद में। हुजूर, हमारी ज़िंदगी में भी हमारे पैराशूट रोज़ाना कोई ना कोई पैक कर रहा है। चाहे वो माँ नाश्ता जो देती है, बीवी आपको कपड़े तैयार करके देती है, शाम को आपका सर्वेंट कुछ करता है, बच्चे आपकी खुशी का बायस बनते हैं। इनडायरेक्टली, वन वे और दी अदर, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दे आर पैकिंग योर पैराशूट. Please remember that we got to be grateful and remember who packs your parachute. The last one. Ladies and gentlemen, we got to leave our signature on this earth. दुनिया की इस वक्त 7 अरब से ज़्यादा आबादी है। आपने कभी सोचा है कि मेरे जाने के बाद इस यूनिवर्स को पता होगा कि मैं आया था और मैं चला गया? कैसे बताएंगे? और will I be amongst those thousands and millions of animals who were born on this earth and vanished without leaving a scar on this earth? इस पे कभी सोचिएगा कि हमने कोई सिग्नेचर जिंदगी का इस पे छोड़ के जाना है कि I came to this universe, I contributed, I paid back to my society, and I'm gone. Please remember, young boys and girls, your attitude is like a price tag. It shows how valuable you are. The mindset. कब्रिस्तान चले जाएं, ladies and gentlemen, कतबा लिखा होता है, this is the date of birth, this is the date of death. In between एक simple dash है, that's your life. ना तारीख पैदाइश आपके बस में है, ना तारीख वफ़ात आपके बस में है। अगर बस में है तो सिर्फ एक डैश। How do you spend your dash depends on you. So take care of your dash. One day, ladies and gentlemen, your life will flash before you, your eyes. Make sure it's worth watching.
I got retired from the Air Force. I had a business. I could have lived on with the memories, good memories, that I was rewarded as Sitara Basalat, Sitara Imtiaz. I was a fighter pilot. Then what? If I am not contributing to my society, I am a burden on this universe. I could eat, but am I paying back what I am eating for? That is what compelled me to work for an inspiration that I had for the last 18 years, and that's about this superb leader. Short and crisp, 2 minute में सिर्फ आपको ये इसलिए शेयर करना चाहूँगा. I'm under a huge debt from this gentleman. I'm trying to pay back a very, very little. Can't be measured what I'm paying back. 2003 I went to Istanbul, stayed there for a year or so for a war course in Turkish language, and then obviously got inspired because जो वो लोग कमाल अतातुर्क की इज्जत करते थे, we were nowhere close. So मैंने आके वापस जना साहब के पोर्ट्रेट इकट्ठे किए, Air Force से इजाज़त लेके, and I was serving then. Obviously they gave me the permission. I served for about 9-10 years. उस दौरान मैंने कोई 450 इतने बड़े बड़े साइज़ के पोर्ट्रेट इकट्ठे किए, फटे पुराने थे. फिर उनको खुद सॉफ्टवेयर सीखा, फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ, यंगस्टर जानते होंगे. देन आई ट्रांसफॉर्म दी वाज ब्लैक एंड वाइट, दी वाज टोन पिक्चर्स. वो एक अलग स्टोरी है. लेकिन मैं क्यों मेंशन कर रहा हूँ दैट आई वांट टू जस्टिफाई व्हाट आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्स एवरी डे. And I'm talking to the youth. I'm teaching a number of universities, local and outside. Because you as youth do not form 100% of our country, but you are 100% of country's future. This is the YouTube channel in case the youngsters are interested. मेरी वो उम्र नहीं है कि मैं ना सब्सक्राइब का कहता हूँ ना कुछ हूँ. I feel happy when I contribute and pay back my debt. खालिद चिश्ती के नाम से. Last story जी before I close. It's a story, and I inshallah make sure that we all done in time. John Stephen Akhbari. Most of the talks that I've given, it's available on in the form of small little clips in case you want to refer it to somebody for learning sake. Subscribe करें ना करें मुझे उससे इस उम्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. But I'm just sharing with you, pass on the good word, and indirectly अगर किसी के बच्चे की ज़िंदगी में कोई positivity आएगी तो अल्लाह हिसाब करेगा. मेरा तो कोई हिसाब नहीं है. जॉन स्टीफन अखबारी वॉज ओलंपियन मैराथन रनर था. ये जो वो 40 किलोमीटर दौड़ होती है, स्टेडियम से बाहर होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. मैक्सिको ओलंपिक्स 1968. ही वॉज ए तंजानियन स्पोर्ट्समैन फ्रॉम तंजानिया. रेस शुरू हुई. जब रेस शुरू हो रही है, भागे तो 16 किलोमीटर भी हुई थी और कोई तकरीबन 24 किलोमीटर रहती थी और स्टेडियम से बाहर हो रही थी. ही fell down and injured his knee and fractured his knee bone. The medical, obviously vehicle ambulances were running, वो साथ साथ चल रही थी. वो आके रुक गई साथ. उन्होंने इसको उठाया और एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाना चाहा. ही रिफ्यूज्ड. ही सेड इधर ही मेरी बैंडेज करो. उन्होंने बैंडेज की. ही गॉट अप एंड लिम्प करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता स्टार्टेड रनिंग अगेन विद दैट इंजरी. Looked like a fool because 73 people are running. They've gone miles ahead of him and he's still running. जब स्टेडियम के अंदर ये हालत थी कि 2 घंटे का गैप आ चुका था, बिटवीन मेडल अनाउंस हो चुके थे उस रेस के, एंड ही वॉज लिम्पिंग बिकॉज इसके साथ एम्बुलेंस चल रही थी और पुलिस की गाड़ियां चल रही थी कि इसको कुछ हो ना जाए. तो लोग जो स्टेडियम से जाने वाले थे स्पोर्ट्स देखने के बाद, वो पुलिस की और वो जो एम्बुलेंस की विसल और हूटर साइन सुन के रुक गए कि क्या हुआ. एंड स्टेडियम के गेट खुले एंड देयर इज अ पर्सन हु इज लिम्पिंग. ये एक्चुअल वीडियो भी अवेलेबल है, मैंने उस यूट्यूब में डाली हुई है. एक्चुअल व्हेन ही एंटर्ड लाइव इन द स्टेडियम, ही इज लिम्पिंग, अनेबल टू रन. आके इसने वो पता नहीं 8 फेरे पूरे किए स्टेडियम के अंदर. भागता रहा. स्पोर्ट्स खत्म हो चुकी है. गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज मेडल लोग घर लेके जा चुके हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल दोज 40 किलोमीटर्स ही फेल डाउन एंड वेंट अनकॉन्शियस. He was taken to the hospital. जब इसको होश आया तो कुछ साथियों ने पूछा कि तुम्हारा दिमाग ठीक है? Why were you running? वो तुम पीछे गिरे पड़े इतने किलोमीटर पीछे और ना तुमने मेडल लेना था तो भाग क्यों रहे थे? Superb answer, ladies and gentlemen. Can be inspiration for
it was like me, can be your inspiration also. He said, my country didn't send me 5,000 miles away to start the race. My country sent me 5,000 miles away to finish the race. Thank you, ladies and gentlemen, and especially all general officers, particularly General S.N. Saleemayad sir and the Honorable Lady Wives. I'm so honored that you were present, and all individually I cannot take time to thank you all. And particularly my mentor and a great friend, Khan Saab, Masood Ali Khan Saab, came all the way to support and encourage and ask me to do it, although he'd heard at one place and he was after me, Kadir se baat karna hai. I'm really honored all of you were here, and especially Amna for saying great words for me. Thank you so much. I leave it to Khan Saab. I think he will take over from here. If there is nothing, thank you very much once again for me. I would like to request General Asniyat, ex-Army Chief of Pakistan, to say a few words. Thank you. Please. Good evening, gentlemen. I feel a little embarrassed because when Masood Ali Khan invited me to come and attend this talk, and he said, you're going to be the chief guest, I said, that's something which I left a long time back. I'm a free man now, so let me be free. But the kind of persistence that he has, he's proved himself to be what he is. But what I want to really acknowledge, that the 41 years that I spent in the army, which is full of motivational talks and lectures, this is one of the best that I've heard in my life. And the thing that I'm going to take back with me is from Masood Ali Khan. I'll keep wondering whether I am an axe or a blade. So thank you very much for this honor that you gave me. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you, Sir Khalid, for such an interactive session, such a session which will actually lead active. Ladies and gentlemen, thank you for being here. And yes, sir. Achha, okay. Aap aa jayein. I just want to share that we have requested Chishti Saab. Some people don't know he's an authority on Qaid-e-Azam. For our next lecture जो है वो Qaid-e-Azam's perception के बारे में है, और I request all the youth and the grown-ups to join us, and we'll be announcing the date very soon. Yeah. Thank you, sir. For the thank you note, as we all know, I would request Mr. Javed Iqbal, the world-renowned cartoonist, to please come upon. Thank you, sir. A legend. A legend, yes, sir. अस्सलाम वालेकुम साहब सदर मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं भी अभी उस लेक्चर के असर में गिरफ़्तार हूँ, और जिस तरह खालिद साहब ने अपने लेक्चर में कहा कि आप जो कर रहे हैं एवरी डे डू समथिंग एल्स, तो मैं तो वही कार्टून बनाता हूँ एक, तो अब मुझे लगता है मुझे 2 कार्टून बनाना पड़ेंगे। तो खालिद साहब एक्सीलेंट टॉक, जनरल साहब ने जैसे बताया मोटिवेशनल, मेरे ख्याल है उन्होंने भी मॉडेस्ट तरीके से काम लिया है। तो ये जो है ना मोटिवेशनल का आज मुझे पता चला है, क्योंकि कायद-ए-आज़म के बारे में सुन के ना आपकी बात, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते कि इतना आप इतने खूबसूरत तरीके से, हमने तो सिर्फ तस्वीरें लटकाई हुई हैं ना दफ्तरों में, और तस्वीर भी अफसर के पीछे लटकाई हुई है, हालांकि उसके सामने होनी चाहिए स्टैंड के साथ, ताकि उसको पता चले कि हम ये किसने हमें दिया ये इतना खूबसूरत मुल्क। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ मसूद अली ख़ान साहब, जो मेरे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 60 साल से दोस्त हैं 55 साल से हैं, वैसे ही इज़ ए मैन ऑफ ग्रेट क्वालिटीज़, और ये हमें पता था कि जब हम इनसे मिले थे बहुत बड़े अफसर थे, तो हमें पता था कि ये बड़ा कुछ करेंगे, और ये माशाल्लाह ये जो हाल इन्होंने दिया है
ये इस सोसाइटी के लिए इससे खूबसूरत तोहफ़ा कोई नहीं हो सकता। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ जो इन्होंने सोसाइटी बनाई है उसका नाम ज़रा मुश्किल है, मैं समझा PTN है, पता नहीं CTN जो भी है, मतलब पॉजिटिवली जो भी अच्छी चीज़ है। मैं उनके बिहाफ पे, मसूद अली ख़ान के बिहाफ पे आने वालों का जो ज़ार है, इनमें मेरे बहुत से शनासा चेहरे हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दावत देता हूँ कि मसूद अली ख़ान साहब के जो भी प्रोग्राम होंगे आप उनमें ज़रूर शमूलियत इख्तियार करें, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ें नहीं करते, ये समथिंग डिफरेंट। तो मैं इनके साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा। थैंक यू वेरी मच। No more lecture. As I said, very simple, high tea. So please enjoy yourself and would like to meet people and exchange your cards and do all the networking. The people sitting all over in the back and the front. And once again, I thank you. And please, हमारी membership ये हमारा 6th program है और हमने women empowerment पे भी किया है। डॉक्टर शाला वहाँ बैठी हैं, शी डिड अ सुपर जॉब। अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो है वाटर एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हाउ टू यूज़ आवर वाटर रिसोर्सेज एंड हाउ टू डेवलप अ क्रॉप, ताकि फ्यूचर में हमें मसले ना हो। और सारी उसकी जो मिनट्स हैं, इट वोंट बी अ सेमिनार स्टाइल, इट विल बी अ कॉन्फ्रेंस स्टाइल राउंड टेबल, और उसकी जितनी भी मिनट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट ऑफिस में और जितने भी अदारे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, फार्मर्स एसोसिएशन एंड ऑन, वी प्लान टू डू दैट एंड दैट विल बी इन द मिडल ऑफ जून। थैंक यू सो मच।